Hello students, how are you all? So, yes, welcome to the class. In today's class, we are again going to discuss a topic from matter in our surrounding, and that is states of matter. Yes, हम आज जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग उसमें से states of matter ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं. Yes, so we will start with the class students. हमने अब तक क्या देखा था? What we have discussed till now in the previous classes we have seen that what is a matter, isn't it? That is, we have seen, हमने देखा कि matter or anything that occupies space and it has mass. Okay, that is a matter. Am I right? Then we have also seen that yes, matter is made up of particles. मैटर पार्टिकल्स से बने होते हैं और पार्टिकल्स कैसे होते हैं? दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स. यस, so they are so much small that we cannot see it with our naked eye also, isn't it? So that also we have seen. Then also we have discussed that the matter can be divided or it can be classified, yes, on the basis of physical as well as a chemical property, है ना? Physically it could be solid, liquid और gas. लेकिन हमने इसके बारे में तीनों solid, liquid या gas इसके बारे में we haven't seen in detail till now, isn't it? But we know that if physically we want to divide, we want to make the matter, we want to study it, it would be in a three forms, that is solid, liquid and gas. इसके साथ साथ लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, है ना? कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? दैट मीन्स द मैटर्स दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. Yeah, the particle of matter is continuously moving. The second characteristics that we have discussed was the particle of the matter, they have space between them, isn't it? So there are the spaces between the particles of a matter. This was the second characteristic that we have discussed. And what was the third one? That the particles of matter attract each other, है ना? So these are the three characteristics that we have already discussed. ये हमने हमारी पिछली क्लास में हमने ये सारा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. So what we are going to discuss today, that means we are going to see the states of matter. या मैटर के कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो फिजिकल बेसिस पे यदि आप देखोगे, ऑन द बेसिस दैट द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स. तीन स्टेट्स में क्लासिफाई कर सकते हो मैटर को. कौन कौन से है? फर्स्ट इज योर solid, then it is your liquid, and the third one is gas. In that way we can classify the matter into the three states. Okay, now properties that decide a given substance to be a solid, liquid and gases. कैसे पता चलेगा कि कौन सा solid है, कौन सा liquid है, कौन सा gas है? हम क्यों किसी को solid बोलते हैं, किसी को liquid बोलते हैं, किसी को gas बोलते हैं? How we can say this, isn't it? If you see the solid, liquid, gases, yes. In this way, I will definitely say that this one, it is a solid, ये solid है. फिर मैं बोल दूंगी कि ये liquid है. And ये gas है. Yes, which is coming out of the cup, it is gas. But how? What is the thing that we can decide? हम कैसे इसकी decision ले सकते हैं कि yes, this is a solid, ice cube is a solid, the water or whatever is present inside the glass. ग्लास के अंदर जो है वो लिक्विड है और जो कप में से बाहर निकल रहा है इन फॉर्म ऑफ ये जो गैस जैसा है, सो दैट इज अ गैस. तो ये डिसाइड करने के लिए देयर आर सम प्रॉपर्टीज. यस, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है. तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी. सो विच आर दिस प्रॉपर्टीज? I will say these are the three basic properties. ये तीन main basic properties है जिसके आधार पर, yes, on that basis you can definitely define that which is a solid, which is a liquid and which is a gas. So this property, the first one is the space between the particles of a matter. Yes. Then the force of attraction between the particles of matter. And the third one is movement of the particles of a matter. है ना?
पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस कितनी है, वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, और वो पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। ये तीन चीज यदि हम देख लें, यस, if we will give the answer of these three things, we will definitely we can define that, हम बोल सकते कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है, किस तरह से, कैसे it is possible. Now we all know that what, that the particles of matter are in a continuous motion. This we have discussed in our previous class. पहले पिछली क्लास में हमने ये प्रूव भी किया था कि किस तरह से हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ द मैटर्स दे आर इन मोशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन की हेल्प लेके हमने ये पूरा डिफाइन किया था, हमने ये प्रूव किया था कि यस द पार्टिकल्स आर इन motion, isn't it? So we know that the particles of matter are in continuous motion. अब मोशन है, मोशन में है, तो कौन सी एनर्जी बेयर कर रहे हैं? They are possessing kinetic energy. Yes, so these particles of matter which are in a motion, they possess kinetic energy. Kinetic energy यानी क्या है? That is an energy of a motion, है ना. जब भी मोशन हो रहा है, यस मूवमेंट हो रही है, सो उसकी जो एनर्जी बोलते हैं दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, है ना, मूविंग फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको बोलेंगे. सो वो सारे पार्टिकल्स जो कि मूव कर रहे हैं, वो क्या पोजेस कर रहे हैं, उनके पास एनर्जी है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी, है ना. नाउ दिस मोशन, जो पार्टिकल्स का मोशन है, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है, दिस मोशन कैन चेंज. ये हम चेंज भी हो सकता है. How it can be changed? It can be changed by increasing or decreasing the temperature. आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो पार्टिकल्स का जो मोशन है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी. रिमेम्बर यस्टरडे वी हैव सीन दिस. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हम गरम रोड पे जाकर बिना चप्पल, बिना शूज पहने यदि खड़े हो जाएंगे तो हम कितनी स्पीड से अंदर आ जाते हैं. Similarly, the particles, yes, when they are given heat, the kinetic energy क्या हो जाएंगी particles की, वो और fast हो जाएगी. Yes, and because of that क्या होगा, we can change the motion of the particles, और ज़्यादा movement fast हो जाएगी. Yes, it will be. Similarly, if I decrease the temperature, the kinetic energy, it will become less, and the particles, the movement, it will become lesser, है ना. So this will be one thing. The second thing, we also know that there are the space between the particles. ये भी हमने देखा था कल कि particles, जो मैटर के particles हैं, उनके बीच में spaces है, और ये spaces किससे related है, मैंने बताया था. The space between the particle is related to the force of attraction between them. And how they are related? They are inversely proportional, है ना. ये inversely proportional है. This I have told you in the previous class only, है ना. यदि आपका force of attraction जो है वो particles के बीच का ज्यादा रहेगा, तो क्या रहेगा, उनके बीच की space कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना. तो इस तरह से ये तीन चीज यदि आप डिफाइन कर लो, ये तीन चीज समझ लो, यस, तो उसके बेसिस पे हम स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है. तो ये याद रखोगे तीन चीज. दिस कीप इन योर माइंड, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. किस तरह से हम डिसाइड करेंगे. नाउ आई विल टेल यू दिस थिंग. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट, दैट इज द सॉलिड्स. या So what are the solids? There are so many examples of solid. This pen which I am having, that is a solid. This phone which I am having, this is a solid. There are so many different things which is solid there. Yes, table, chair, fan, then glass, isn't it? Tree, नहीं, और क्या बोल सकते हैं? Pen, pen. I have told you, iron block, isn't it? Ice cube, wooden block, needle. All these things, sugar, sand, all these things are what? ये सारी चीजें solid है ना. So why we call this all as a solid? Yes, why we call sugar, sand, paper, pen, wood, iron, needle and so many other things as a solid?
इमेजिन करो इनके स्ट्रक्चर कैसे, आप इमेजिन करो ये पेन कैसा है ना, आप इमेजिन करो नीडल कैसी रहेगी, आप इमेजिन करो शुगर का एक क्रिस्टल कैसा रहेगा। ये सभी को सबसे पहले मैं बोलूंगी, इन सभी को बाउंड्रीज जो है, इसकी बाउंड्री फिक्स्ड है ना। ये चेंज होगी क्या बाउंड्री? will be changed? No, it is fixed. But so how I can define, or how I can say that this particular thing is a solid there, students? Okay, why? Yes, why we can say that these all things are the solid? Now again, as I told you, जो तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कौन सी तीन प्रॉपर्टी? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, yes, then the movement of the particles and the force of attraction between the particles, वो हम देखेंगे, और on that basis we will decide that why these things are the solid. Now if I talk about the space between particles, how is the space between the particle of a sand, sugar, paper, anything that you think is a solid? कोई भी चीज solid है, suppose जैसे मैं ये पेन ही ले रही हूँ, ये solid है, तो इसमें जो particles है, ये particle से बना हुआ है, तो इसकी space कैसी रहेगी? क्या दिख रहा है आपको? Will be there any space between the particles? The space between the particle of a solid, it would be minimum, कम से कम स्पेस रहेगी, है ना, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ में, इसीलिए तो वो सॉलिड है ना, दैट्स व्हाई इट इज अ सॉलिड, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, it is minimum. Yes, the space between the particle is minimum. Similarly, now यदि space between the particles minimum है, तो force of attraction कैसा होगा? I told you, वो उल्टा हो जाएगा, inversely proportional है. यदि ये minimum है, तो force of attraction maximum हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे पार्टिकल्स एक दूसरे को, उतने ज्यादा पास में आएंगे, they will come more closer to each other. And if they will come more closer to each other, what will happen? The spaces between them, it will be less, isn't it? So the second point, that is okay, before the second point, I have given you this a figure only. Yes, in the figure you can see the space between the particle. ये एक particle है, for example, ये particle है, ये particle है, तो spaces कैसी है? It is very less, isn't it? It is very less. That is, it is a minimum space between a particle. Yes. Then the second is force of attraction. Now, because the particles are very close, the force of attraction, या उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स, यानी ये दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स, it would be maximum. Yes, it would be maximum, or it will have a strong और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सॉलिड के, यस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. या सो नाउ दीज आर द पार्टिकल्स, दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज अनदर, थर्ड. इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, यस, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कैसा रहेगा? इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत टाइट रहेगा, and that's why the particles are bind together. Got it, students? Now what is the third point? The movement, है ना. So what is the movement of the particles or the kinetic energy of the particles? अब जब पार्टिकल के बीच की स्पेस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या वो मूव कर पाएंगे? ये पार्टिकल पहन के आपको लगता है कि वो मूव कर रहे हैं? नो. The movement of particle, it will be again minimum. Yes, or it would be least, कम से कम movement होगी. Yeah, so the kinetic energy is also very less. Yes, why it is very less? Because particles are very close to each other. जब बहुत पास पास में रहेंगे तो मूव करने की जगह ही नहीं रहेगी ना. यदि कोई रूम पूरा पैक्ड है, यस, यदि कोई रूम पूरा पैक्ड है, तो वहां पे जो लोग बैठे हैं, जैसे ट्रेन, हम लोकल ट्रेन में जाते हैं, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉन इन अ लोकल ट्रेन इन द मुंबई और लाइक दैट.
So how much rush it is there in a local train? Yes, when you go inside a train and when it is a completely packed train, you cannot move. Space between द पर्सन्स है ना, जो लोग रहते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम रहती है. स्पेस कम रहती है तो मूवमेंट भी कम हो जाएगी, isn't it? So if the space between the particle is less, the movement or the kinetic energy, that is the energy of a motion, it will also be less. Yes, so if these things are there, if the space between particle is minimum, if the movement between the particles is minimum, if the force of attraction is maximum, then that matter is considered to be a solid matter. तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको सॉलिड बोलेंगे. सो ऑन दिस बेसिस, यस, मैं लिख सकती हूँ, आई कैन डेफिनेटली राइट हियर दैट वी कैन से that the solid particles, yes, say that solids have, yes, solids have what? Strong force of attraction, isn't it? Solids have strong force of attraction which keeps, ये जो अट्रैक्शन है ये उसके पार्टिकल्स को कैसे रखेगा? टाइटली पैक्ड. यस, विच कीप्स देम टाइटली पैक्ड. यस, leaving minimum space, leaving minimum space between them. I hope this is clear. As well as least movement. ये मैंने लिख लिया. I have given this statement on the basis of the 3 points that we have discussed. है ना, हमने जो 3 पॉइंट पढ़े उसके बेसिस पे हमने ये वाला स्टेटमेंट निकाला. Yes, now on this basis only हम ये भी बोल सकते हैं कि thus solids are rigid. Solid कैसे है? Solids are rigid, जो कि easily break नहीं हो सकते हैं. Yes, they are rigid. This is the first point. I can say there for a differentiation. लेकिन on applying force, यदि इसमें हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे so it can break also. The solids are rigid, but I will write here, but on applying too much of force, it can break. वो टूट सकता है, but टूट जाएगा लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा. Yes, it can break, yes, but do not change the shape. इसको मैं तोड़ दूंगी, यदि बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये पेन का जो शेप है ये चेंज नहीं होगा, है ना. इसको so the shape will not be changed, but yes, it can break if we will apply too much of force on a solid. So solids are rigid. That is the first point. Second point I can write here. Second क्या लिख सकते हैं? That solid have fixed shape and fixed volume. वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है. क्यों? देखो, ये शेप जैसा है वैसा ही है. वॉल्यूम, ये जितना वॉल्यूम है उतना ही है. आप कहीं पे भी डाल दो ये इतना ही रहेगा. सो इट इज हैविंग अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. व्हाट इज द रीजन? क्यों हम बोलेंगे कि ये फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है? हम जो भी लिख रहे हैं ना वो इसके बेसिस पे लिख रहे हैं. ये जो 3 पॉइंट्स हमने कवर किए, क्यों फिक्स शेप है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो they are very close to each other. The particles of the solids, they are very close to each other because there is a strong force of attraction. Yes, and the space between them is least. Therefore, their shape is fixed. Its volume is also fixed. It is having a fixed boundary also. The boundary भी change नहीं होगी.
Am I right? Then one more point you can write for the solid. That means the solids do not flow. Solids do not flow. ये flow नहीं होते. क्यों नहीं होते? Because they are rigid. Yes, ये flow नहीं होते because they are rigid. Isn't it? Because the movement between the particle is very less and the particles are in fixed position. Movement बहुत ही कम है. यदि movement ही नहीं है तो flow कैसे होगा? Isn't it? So they will do not flow. The third point is the solids cannot be compressed. Solids cannot be compressed. हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस्ड यानी हम उसको दबा नहीं सकते. इसको यदि मैं प्रेस करूंगी, इफ आई try to compress it, will it be compressed? No. Yes, it is as it is. ये जैसा है वैसा ही है. If I'll compress it too much, then also it is as it is. So you cannot compress generally. Why? Because again the particles are very tightly packed with each other. They are very close and there is a strong force of attraction between the particles. I hope this is clear. Yes, one more point for the solids we can write that the solids have high density. Density उनकी बहुत ज़्यादा रहेगी. Yes, why it is high density? Because the particles are very close to each other, so it is a dense. Yes, क्योंकि बहुत पास पास में है, ये तो हम उसको भी बोलेंगे ना, कोई भी चीज बहुत घनी रहेगी, बहुत पास में रहेगी तो हम उसको बोलते हैं dense. So it is a highly dense. It is having a high density. I hope this is clear. So these are some points for the solid. Yes, ये सारे कुछ points हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि yes, the particular matter is solid in nature. Now, there is a question for all of you students. The question is, the rubber band changes its shape on stretching. Is it a solid? If yes, then explain. Rubber band को हम stretch करते हैं. I have a rubber band. Yes, this is a rubber band. Yeah. So this is a rubber band. You can see here. तो इसको यदि हम stretch कर रहे हैं, I am stretching it. So the shape, ये देखो, ये original shape ही है rubber band का. This is the original shape. When I am stretching it, its shape is changed. Shape तो change हो गया. तो क्या rubber band solid है? हमने अभी solid में पढ़ा property में that it is having a fixed shape. But here on stretching, the shape of the rubber band is changed. So is it a solid? If yes, then why? If no, then again why? So I will say here that yes, the rubber band is a solid. You see students, आप इसको ऐसे ही देखो. मैं अभी stretch नहीं कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो it is having a fixed boundary. Yes, ये जो part है उसका, ये जो part है, the whatever the part of a rubber band is there. Yes, what we can say that? It is again, it is having a fixed boundary. It is having this shape only. जब हम उसको stretch कर रहे हैं, यानी हम उसमें जब force apply कर रहे हैं, then only it is changing the shape. But when I am taking the force off, मैंने force छोड़ दिया, मैंने stretching छोड़ दी, तो वापस से rubber band वही shape में आ गया. वो वही shape में आ गया. That means what? That means it is a solid. Yes, it is a solid. It is changing its shape only when force is applied. And again it is regaining the shape. वो अपने shape में फिर से आ जाता है original shape में जब वो force leave कर देते हैं हम. Yes, जब वो force हम हटा देते हैं तो अपने आप वो अपने original shape में आ जाता है. तो वो एक solid ही है. एक्सेप्शन है उसका कि वो शेप चेंज करता है, लेकिन वो कब करता है? जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं. और यदि हम इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, इफ आई स्ट्रेच इट टू मच, इट इज पॉसिबल दैट द रबर बैंड इट वुड ब्रेक.
यदि मैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करूंगी तो रबर बैंड टूट सकता है, लेकिन वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा. So that is a property of a solid, that on applying too much of force, it can break. Isn't it? It is having a fixed shape, but on applying too much of force, the solid can also break. So if on applying too much of force, on applying too much of stretching there, this rubber band can also break. So yes, the rubber band is a solid. Got it, students? Yeah. So it is given here, the rubber band changes its shape only when the force is applied, and on removing the force, it regains its original shape. So it is a solid. Yeah. Now, if it is stretched with a large force, it breaks just like other solids. So again, I can say yes, the rubber band is a solid. I hope it is clear. समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको बुक में भी पूछा गया है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको अलग से, कुछ अलग से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको, सपोज यहाँ पे सॉलिड बोला है, तो सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, दैट आपके दिमाग में आ जानी चाहिए. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, एंड देन यू कंपेयर विद दैट प्रॉपर्टी टू दिस पर्टिकुलर थिंग विच दे आर गिविंग, एंड देन यू कैन गिव योर आंसर. यानी इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्पॉन्ज. स्पॉन्ज पता है आपको? यस, द स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड. हमने बोला सॉलिड्स डू नॉट कंप्रेस, बट वी से दैट स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, बट स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड. वो हम उसको प्रेस करेंगे तो वो दब जाता है. स्पॉन्ज पता है ना? Yes, वो दब जाता है. Then how you can say that it is a solid? Can you think about this? Why we say that it is a solid? One more question is there. Salt or sugar, they will take the shape of the jar in which they are kept. यदि मैं शुगर का पूरा पैकेट किसी जार में मैं डाल दूंगी, किसी भी जार में, या सॉल्ट का पैकेट, yes, completely if I'll open it and if I'll put it there inside the thing, the sugar or the salt, so whatever jar shape it will be there, that sugar or salt, it will take the shape of that jar. वो जार का शेप ले लेगा, है ना? मैं राउंड बॉक्स में डालूंगी, राउंड jar में डालूंगी, so it will become a round shape. If I'll add it in a long jar, it will become a long shape. So how it is a solid? सॉलिड तो अपना शेप चेंज नहीं करता है. हाउ इट इज अ सॉलिड? और आर दे सॉलिड्स? सो टू दिस टू क्वेश्चंस आई कैन गिव यू द आंसर. पहले क्वेश्चन पे जाते हैं. स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड, है ना? स्पॉन्ज हम कंप्रेस करते हैं. सॉरी. So why the sponge it is, or how it is a solid? So if I want to answer to this question, students, I can say here, look, this is the sponge. It is compressed here. ये हाथों से दबाया जा रहा है तो ये दब रहा है, लेकिन सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते. ये सॉलिड है. यदि मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, बट इट इज नॉट कंप्रेसिंग. यस, so how I can say that this is a solid? How this is a solid? Yes. तो देयर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, ये स्पॉन्ज में छोटे छोटे, व्हाट कैन यू सी हियर, स्मॉल पोर्स आर देयर. यस, देयर आर स्मॉल पोर्स. छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, बहुत सारे पोर्स रहते हैं स्पॉन्ज के अंदर. और ये पोर्स में क्या रहता है स्टूडेंट्स? ये पोर्स में एयर फील्ड रहती है. व्हाट इज देयर? देयर इज एयर इन दिस पोर्स. तो जब आप स्पॉन्ज को प्रेस करते हो ना, जब आप कंप्रेस करते हो, उसको दबाते हो, तो ये जो हवा है पोर्स के बीच की, वो निकल जाती है. तो जब हवा निकल जाती है तो जो स्पॉन्ज का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा? जब हवा निकल जाएगी वो छोटा हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा. लेकिन जब आप उसको प्रेस करना छोड़ दोगे, आपका हाथ ले लोगे, तो ये स्पॉन्ज वापस से अपने शेप में आ जाएगा, क्योंकि वो पोर्स में फिर से हवा एंटर हो जाएगी, एयर विल एंटर एंड इट विल रीगेन इट्स शेप अगेन. यस, so that's why
The sponge is also a solid only. Yes, yet it is compressed, but yes, it is a solid because of the minute pores which the sponge is having, and in the minute pore air is filled. Yes, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो ही वो एयर बाहर निकलेगी और वो स्पॉन्ज कंप्रेस होगा. यदि हम उसको प्रेस नहीं करेंगे तो इट विल रिगेन इट्स शेप. So only on applying pressure, just like for the rubber band, only on applying pressure, it is changing the shape. Yes, here also only on applying pressure, the sponge is compressing. Got it? That's why the sponge is a solid. The other question was, if the salt or sugar is added in a container, it will take the shape of the jar. Okay, one more point it is there for the sponge, that when the pressure is released, it regains its shape. We have discussed this, isn't it? Compressibility is due to the minute pore. ये compress क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ये minute pores है इसीलिए. Got it? Now, this is a sugar. You can see ये sugar है. मैंने ये बाउल में रखी है. Yes, I have kept it in a bowl. So it has taken the shape of this bowl. Am I right? It has taken the shape of the bowl. Now, if I kept the sugar, the same sugar, in this jar or in this bottle, it has taken the shape of the bottle. पहले sugar ने ये shape ले लिया. In the second, the sugar has taken this shape. Then how it is changing the shape? Then how it is a solid? Now listen carefully students. बहुत ध्यान से सुनो. यहाँ पर ये जो बात हो रही है, ये शुगर के एक क्रिस्टल की बात नहीं हो रही है. ये एक शुगर, इट इज इन अ गुड क्वांटिटी. बट हम किसको बोल रहे हैं सॉलिड? वी आर टॉकिंग दैट शुगर क्रिस्टल इज अ सॉलिड. तो इसमें से आप कोई भी एक शुगर का क्रिस्टल ले लोगे, आप देखोगे इट इज जस्ट अ सॉलिड पार्टिकल. क्यूबिकल शेप होता है. Yes, it is a solid particle only. Single sugar crystal. It is very small. ये बहुत छोटा सा क्रिस्टल होता है जो कि अपना शेप चेंज नहीं करता है. Yes, but if you are adding so many sugar crystal together, yes, they are taking the shape of the container, but not a single sugar crystal. हर एक क्रिस्टल को आप देखोगे तो क्रिस्टल अपना शेप चेंज नहीं करता है. It will not change the shape. Yes, so individual sugar or salt crystals are very small, but they have definitely a definite shape. उनका shape same रहता है. Yes, when we put in the jar, its shape also remains fixed. इसके shape आप हर एक क्रिस्टल को अलग अलग करके देखो तो ये आपको हर एक क्रिस्टल सपोज ये शेप का दिखेगा. जब ये चारों क्रिस्टल को आप जार में डालो तो भी उसके क्रिस्टल का शेप वही रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द शेप. यस, सो हियर वी हैव टू थिंक अबाउट एन इंडिविजुअल शुगर क्रिस्टल. आई होप दिस इज क्लियर. सो दीज आर सम क्वेश्चंस और विच वी कैन से दैट कुछ एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज से we can define that yes, this matters or the substances are a solid. Yeah, why they are solid, that we have already discussed. So this was about the solid. Now the second type of matter, what is it? Okay, there is a question again. Now if someone asks you a question, यदि कोई question पूछता है कि rubber band, sponge, salt or sugar are solids, is it true or false? Now what is your answer, all of you? क्या आंसर आएगा आपका? Is it true? Are they solid or false? अभी हमने तीनों explanation देखे, तीनों के explanation देखे. Now what should be your answers? Yes, all of you, they are solid. So my statement is true. My statement is true. Am I right? Now, moving for the second particle or the state of particle, that is liquids. Now, what are liquids? Again, my favorite, because इसके बिना मेरे class नहीं होती है, water. I need water always to drink. So, water, it is a liquid.
Yes, milk, it is a liquid. Ink is a liquid. Yes. Then what can you say? और कौन कौन से एग्जाम्पल है लिक्विड्स के? कोल्ड ड्रिंक, योर फेवरेट है ना. In summer we drink so many cold drinks. Then sharbat, isn't it? All these juices, different fruit juices, oils, petrol, kerosene, all these are what? All these are liquids. Yes. So students, water, milk, oil, juice, cold drink, petrol, etc. all they are liquid. Why these we say that they are liquid? Again we will discuss on the basis of the three properties. जो हमने starting में तीन properties देखी थी, उसके basis पे ही हम discuss करेंगे कि why we say that they are the liquids. First of all, if I talk about the space between the particles. Yes, so ये liquid है, ये water है. देखो it is moving, हिल रहा है ये, है ना. So how will be the space between the particles for a liquid as compared to solid? यदि ये solid है और ये liquid है, अब ये दोनों को compare करोगे तो इसके particles और इसके particles, yes, or the glass, this glass is a solid. Yeah, so the particles of this and the particles of the water which is inside that. What is the difference there? The space between the particles. Definitely the space between the particles of a liquid, it is little more than solid. Solid के comparatively थोड़ी ज़्यादा space रहेगी. Yes, so the space between the particle is more than solid. But it is not very much. बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है. But yes, as compared to solid, it is more than. Got it, students? You can see here in this figure. पहले वाले figure में हमने solid में देखा था. So the particles, they were how? The particles, they were very close. Now here we can see the space is there. Particles के बीच में space है ना. Solid में space नहीं थी. So it is more than the solid. Got it, students? Now the second point, the force of attraction. यदि space थोड़ी ज़्यादा है तो force of attraction कैसा होगा? The force of attraction between the particle, it will be less than solid. Again, because space between the particles or force of attraction inversely proportional है. क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इसीलिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थोड़ी ज्यादा होगी, है ना. थोड़े से दूर दूर रहेंगे क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. बट रिमेंबर इट इज लेस देन सॉलिड, बट अगेन इट इज नॉट वेरी लेस. I can write here it is less than solid but quite strong to hold the particles together. Yes, उतना तो भी है कि वो particles को साथ में रख सकता है. Got it? So this is the second point for a liquid there. You can see here. In the solid, we have seen that they were having a strong force of attractions, but here this particle may be moving like this. This is moving here. This is moving here. So they are having a little less force of attraction as compared to solid. Now what will be the movement? आप देख सकते हो, they are moving. Yes, the particles of the liquids, they are moving because क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में जो force of attraction है वो कम है. So if the force of attraction is less, so the movement or the kinetic energy of the particles, it will be again more than solid. Yes, that's why we can say that the liquid can flow, it can move. ये लिक्विड को ये ग्लास में से मैं दूसरे ग्लास में यदि मैं निकालूं, so it can move. It is moving. Look, it is moving. It is coming here. Again, it is going downwards. It is coming there. So move हो रहा है ये लिक्विड अंदर में. Yes. So it is moving. Why it is moving? Because the movement of particles, it is there.
The movement is there in the particles. It is little bit more than the solids. Got it, students? So particles in the liquid can move from one position to another position also. Got it? So on this basis, this is a third, three points there. On this basis only, we can again write for the liquids that the liquids are not rigid. Liquids rigid नहीं है, तो rigid नहीं है तो कैसे है? Yes, they are fluid. वो fluid है, rigid नहीं है. Fluid means they are anything that can flow. जो भी चीज फ्लो हो सकती है उसको बोलते हैं फ्लूइड. सो लिक्विड्स आर फ्लूइड. Yeah. Similarly, liquids do not have fixed shape. इसका फिक्स शेप नहीं है. देखो, ये ग्लास में लिक्विड है, इसका शेप अभी इस तरह का है. The shape is like this. If I'll keep the glass like this, मैं इसको टिल्ट कर दूं ग्लास को, तो ये लिक्विड का शेप कैसा हो गया? The shape is like this now. Yes, it has changed the shape. If I pour this glass water in some another jar, suppose मैंने round jar में pour कर दिया, तो वो shape उसका ले लेगा. It will become round. So that's why the liquids do not have fixed shape. क्यों नहीं है fixed shape? Because the particles of the liquid, yes, they have some spaces between them. The force of attraction is less, and main point that the particles of the liquids are moving. Because they are moving, it is not having a fixed shape. Okay, so like liquids do not have fixed shape. They can take shape of एनी कंटेनर. जो भी कंटेनर में आपको लिक्विड को डालोगे वो कंटेनर का शेप ले लेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कांस्टेंट वो मूवमेंट में, दे आर मूविंग देयर. या आप अलग अलग टाइप के कंटेनर्स लोगे, अलग अलग साइज के कंटेनर्स लोगे, और आप सपोज 100 ml वाटर ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ यू आर एडिंग द सेम 100 ml वाटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर, तो व्हाट यू विल सी, आप क्या देखोगे कि जो कंटेनर में आप वो पानी डाल रहे हो, पानी तो उतना ही रहेगा. इट विल रिमेन 100 ml ओनली. यस, but the shape of that water or the liquid, it will change according to the container. जैसे जैसे कंटेनर चेंज होगे उसका शेप भी चेंज होगा. यस, और वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इजीली फ्लो भी होता है. So volume change नहीं हो रहा है. So I can write here that liquids have, yes, fixed volume. जैसे कि मैंने बताया, यदि 100 ml वाटर लिया मैंने, and I'm adding that 100 ml water from one container to another, it will be 100 ml only. Yes, so it is having a fixed volume. Again, here also there should be one point. यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है. It will have a fixed volume at a given temperature. Yes, it will have a fixed volume at a given temperature. क्योंकि एक अभी जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर में इसका ये वॉल्यूम फिक्स है. लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यदि मैं इसको गर्म करूंगी, so what I can say, the volume, it will change. Yes, so at a given temperature, the liquids, they will have a fixed volume. It can change on changing the temperature. Remember this thing. Yes, can change on changing temperature. So this is the point for a liquid. One more point we can add. यदि हम compressibility की बात करते हैं, तो liquid can be compressed little.
जैसे सॉलिड हम बोले थे कि इट विल नॉट कंप्रेस, बट लिक्विड्स कैन कंप्रेस लिटिल, थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. Yes, there is a space between the particles, and so that the liquids can be compressed little bit, but not very much, but yes, little compression it is there. Yeah. Then density, again for the liquid also it is your high density only. The particles के बीच में space है लेकिन बहुत ज़्यादा space नहीं है. They are still close to each other, not that much like the solid, but still they are close to each other. So it is also having high density. Yes, and one more point you can write, that the liquids can flow easily also, because the particles, they are moving. Yes, they have a weaker force of attraction, interparticle force of attraction कम है, so the particles move होते हैं, that's why the liquids can flow easily. I hope this is clear. So these are the points that we can say for a liquid. Yes, so the solid, liquid and gas all can diffuse in a liquid. ये एक बहुत important point है कि आप liquid में just a minute. Okay, if we talk about any solid, if we talk about any liquid, or if we talk about any gas, and if you think to diffuse it or to dissolve it in a liquid, is it possible? Yes. Yes, that means the solid, liquid and gases all can diffuse in liquid. कैसे? How it is possible? I will give you some example. हम कुछ example मैं दूंगी, उसी से समझ आ जाएगा. देखो, शुगर को यदि मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो क्या है? शुगर इज अ सॉलिड, water is a liquid, so this is solid in liquid. Now ink is a liquid, water is a liquid, so this is an example of liquid in liquid. Similarly, the different gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, ये सारे क्या है? ये gases हैं. ये gases भी water में dissolve होते हैं. जब aquatic animals, you know all the aquatic animals, the animals that live in water, how they take the oxygen, how they breathe. Yes, how they take the oxygen, they are living in the water. So they cannot take the oxygen from the atmosphere. हवा में से तो वो ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो तो पानी के अंदर रहते हैं. तो वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? पानी में वो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है और वो डिसॉल्व ऑक्सीजन वो यूज करते हैं फॉर ब्रीदिंग. Yes, so that is again a example of diffusion of a gas in a liquid. Yeah, so we can say that in a liquid, all type of matter, that means solid, liquid and gas, all can diffuse. Yes, so this is also one point that you should remember. So इसके basis पे हम बोल सकते हैं कि जो rate of diffusion है, yes, वो किस तरह से रहेगा? It would be greater than that or in the liquid. Yes, the rate of diffusion liquid में कैसा रहेगा? It would be greater than that of solid. Solid से ज़्यादा रहेगा. As the particles of liquid, they have what? They have less force of attraction. Yes, and greater interparticle space between them as compared to solid. यदि मैं solid और liquid की बात करूं तो rate of diffusion कैसा रहेगा? Liquid में rate of diffusion ज़्यादा रहेगा solid के comparison में, है ना? Because in the liquids the particles, they have a less force of attraction. Yes, and there is a greater interparticle space between them. Yeah, तो space ज़्यादा रहेगी और attraction कम रहेगा particles में, तो एक particles में दूसरा particle easily diffuse हो सकता है, easily mix हो सकता है. इसीलिए rate of diffusion liquid में ज़्यादा रहेगा as compared to solid. I hope this is clear. So we have discussed two states of matter, solid and liquid. हमने ये दो state of matter पढ़े, हमने कुछ questions भी पढ़े. Yes, और ये दोनों state के हमने differentiate किया that how we can say that this is a solid and this is a liquid on the basis of three main properties. उसके basis पे हमने और भी properties बनाई किसकी? Solid की और liquid की, है ना? So I think this is clear what we have done.
one more state of matter is remaining, that is gases. But that part we will discuss in our next class. Yes, gases के बारे में हम next class में पढ़ेंगे. आज हमने solid और liquid के बारे में पढ़ा है. So students, आपका homework रहेगा that you have to study the part whatever we have discussed. आप read करो आपकी book में से, text book में से. Yes, and try to solve the questions related to this part. इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. ट्राई टू मेक योर ओन क्वेश्चंस. अपने आप कुछ क्वेश्चंस बनाओ, सोचो. आपको और कोई क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन ऑल्सो कमेंट मी. आप मुझसे पूछ सकते हो. आई कैन हेल्प यू आउट. और एल्स यू कैन ऑल्सो download the Arth Academy app, where you will get the materials related to the topics, and a complete video session will also be there. Yes, so till we meet in the next class, thank you all students. Yes, keep learning. All the very best for your studies. And yes, you can download the app through this link, and you can, if you have already downloaded, आपने download कर लिया है, you can share this to your friends or whoever is interested in this. Yes, so you can help them out also. So you can share this link and ask them to download the app. Okay, so till the next class, students, all of you, once again, bye bye and take care. Bye students.